Hello friends, this is Nutan. Welcome to our mavericks channel. लास्ट वीडियो में हमने साइक्लिक ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स और उसके ऊपर थ्योरम्स, उसके कोरोलरीज देखे थे। आज इस वीडियो में हम सब ग्रुप्स देखेंगे और उसके ऊपर जो एग्जांपल्स हैं वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सब ग्रुप्स ऑफ Zn. For each positive divisor k of n, the set n divides k is unique subgroup of Zn of order k. For each positive divisor k of n, the set n divides k is unique subgroup of Zn of order k. For each positive divisor k of n, the set n divides k is the unique subgroup of Zn of order k. Suppose example लेते हैं, list subgroup of Z30. तो उसका वन, अगर वन लिया, पहले हम लिस्ट बनाएंगे तो Z30 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो पहले देखते हैं Z30 में तो यहाँ पे देखो Z30 में जो डिवाइजर है पॉजिटिव डिवाइजर, यानी कि 1, 2, 3 से डिवाइड होता है 30 को, 4 से नहीं होता, 5 से, 6, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 एंड लास्ट वन इज द 30। तो ये प्रॉपर डिवाइजर है Z30 की। तो 1 से 0, 1, 2 अप टू 29 तक आ जाएगा, पॉजिटिव डिवाइजर है। तो इसका ऑर्डर है, टोटल कितने एलिमेंट्स है 30, तो इसका ऑर्डर आएगा 30। नेक्स्ट 2 के लिए, तो 2 से 0, 2, 4, 6 अप टू 28 तक आ जाएगा। इसका ऑर्डर है टोटल 15 आ जाएगा। 3 से 0, 3, 6, 9 अप टू 30 तक, सॉरी 27 तक आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 6, 3। नेक्स्ट है 5 से 0, 5, 10, 15, 20, 25। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा, तो इसका ऑर्डर है 6, इसका ऑर्डर आ जाएगा 10। नेक्स्ट है 6, तो 6 से 0, 6, 12, 18 एंड 24। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 5। अगेन 10 से 0, 10, 20, ऑर्डर है 3। 15, 0, 15, ऑर्डर 2। 30, सिर्फ 0, ऑर्डर 1। तो ये इसके ऑर्डर ऐसे निकाले जाते हैं। सब ग्रुप में क्या है, इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, प्रॉपर डिवाइजर ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 1 बाय 1 एग्जांपल्स देखते हैं सब ग्रुप्स के ऊपर। पहला एग्जांपल लेते हैं,
Example first, consider the group Z 10 plus 10 with generator A is equals to 1 bar. The GCD, that is greatest common divisor of 2 and 10 is 2 and 10 is 2, and 2 is equals to 2 into 1, generates subgroup with 10 divided by 2 is equals to 5 elements. सॉल्यूशन देखो इसका, तो पहले देखो Z10 है, तो H1 में सपोज जनरेटर ऑफ 2 है, तो इसके 2 0 बार 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार एलिमेंट्स आएंगे. देन GCD ऑफ 5 and 10 is 5 and 10 is 5. Then 5 generates 10 by 5, that means 2 elements. And therefore H2 is equals to, it generates 0 bar and 5 bar. Next, GCD of 3 and 10 is 1. 3 generates subgroup of 10 by 1, that means 10 elements. Therefore H3 is equals to 3, which is Z10, because इसका GCD क्या है, 1 ही, and that is 3 is a generator of Z10. तो 1 by 1 हम देखते हैं. सपोज 2 लिया तो 2 जनरेट्स 0 बार 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार, एंड GCD ऑफ 5 and 10 is the 5. दोनों में से कॉमन क्या है, 5. तो 5 generates 10 by 5, that means 2 elements. So 5, H2 is equals to 5 लिया तो 5 is 0 bar 5 bar, and GCD of 3 and 10 is 1. And then 3 is generated subgroup of 10, that means 10 by 1, that means 10. And therefore it generates all the subgroups of 10, and therefore 3 is the generators of Z10. Next example देखते हैं, example number 2. Find all generators of group Z6 plus. Since in Z6 elements, how there will be elements are present in Z6, that means n is equals to 6. And since therefore Z6 is cyclic group of order 6. Cyclic group of order 6. Suppose M is generator of Z6 if and only if M6 is equals to 1, and therefore M is equals to 1 and 5, because GCDs are 1. Here 1 bar and 5 bar are generators of Z6 plus, and therefore Z6 is equals to 1 bar and 5 bar, because 1 bar and 5 bars are the GCDs are 1. Next example देखते हैं, example number 3.
Find number of element in cyclic group of Z30 plus generates by 25. तो यहाँ पे देखो क्या करना है. फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन साइक्लिक ग्रुप. नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करना है Z3 में, and which is generated by 25. So first we calculate GCD of 25 and 30, which is common divisor is the 25 and 30 is 5. And there are total 30 elements, which is divided by 5. That means 6 elements in subgroup. And they are, तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 0 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार एंड 25 बार. यहाँ पे 15 है. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4. Find all subgroup of Z12 and plus 12. So solution. Find all the subgroups of Z12. So यहाँ पे देखो 0 बार and Z12 are improper subgroup. So H contains 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar, 6 bar, 7 bar, 8 bar, 9 bar, 10 bar, 11 bar, which is belongs to Z12. So Z12, which is equals to 1 bar, is cyclic group generated by 1 bar. So suppose A is equals to 2 bar and H1 is equals to N2 bar, where N is belongs to Z. Then H1 is equals to 0 bar, 2 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar, 10 bar. Is subgroup of Z12 generated by 2 bar. नेक्स्ट ये H1 हुआ. नेक्स्ट H2 में 3 बार के लिए 0 बार, 3 बार, 6 बार एंड 9 बार. अगेन H3 के लिए आएगा 0 बार, 4 बार, 8 बार. H4 में आएगा 0 बार, 6 बार. And these all are the subgroup of Z12. H1, H2, H3, H4. These all are the subgroups of Z12. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 6. एग्जाम्पल नंबर 5. Find all subgroup of cyclic group of order 12 for
subgroup relation. So let G is equals to A raised to 0, that means E, A square अप टू A12 तक है, इसलिए यहाँ पे A11 बिकॉज हमारे वैल्यू क्या रहती है A raised to n-1. B a cyclic group, B a cyclic group generated by A, generated by A of order 12. And therefore subgroup of G have 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Therefore H1 is equals to E. Then H2 is equals to E or A raised to 6. H3 is equals to E, A raised to 4, A raised to 8. H4 is equals to E, A cube, A6, A9. Then again H5 is equals to E, A raised to 4, sorry, A raised to square, A raised to 4, A raised to 6, A raised to 8 and A raised to 10. And last one, H6 is equals to G group, which is order 12. So ये हुए subgroup, all subgroups of cyclic group of order 12. Because G में E आएगा A square up to A11 तक आएगा because ये cyclic group का फॉर्मूला है. तो subgroup of G, H1 first E आएगा, H2 में E और A raised to 6 आ जाएगा. Then E, A raised to 4, A raised to 8, A raised to cube, A raised to 6, A raised to 9, then A square, A4, A6, A8, A9. So these are all the subgroups of H. Next example लेते हैं, example number 6. Let G is equals to Z7 dash 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar or 6 bar. Find all subgroup of G. तो सॉल्यूशन देखो इसका, Z7 है, तो इसमें 1 बार है. 1 बार क्या है, इसका आइडेंटिटी होगा. 1 बार इज आइडेंटिटी and Z7 is an abelian group under multiplication modulo 7. Under multiplication modulo 7. So first we take A is equals to 2 bar. So 2 बार लिया तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, 2 बार, 4 बार और 1 बार. दैट मीन्स 1 बार, 2 बार एंड 4 बार आ जाएंगे. नेक्स्ट वी टेक A इज इक्वल्स टू 3 बार. सो 3 से मॉड्यूलो क्या आ जाएगा, 3 से 3 बार, 2 बार, 6 बार, 4 बार, 5 bar and 1 bar. That means 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar, 6 bar, which is equals to 3 bar, which is generated by Z7.
That means 3 bar generates Z7. Take A is equals to 4. So इसके मॉड्यूलस क्या आ जाएंगे? उसको हमने सपोज H कंसिडर किया है, इसको H1 कंसिडर किया है, तो नेक्स्ट A इज इक्वल्स टू 4 के लिए H2 कंसिडर करेंगे। तो इसमें टोटल 1 बार, 2 बार और 4 बार आ जाएंगे, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू H। नेक्स्ट A इज इक्वल्स टू 5 बार, सो 5 बार लिया, फाइव बार, तो H3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ऑल प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे Z7 की। दैट मीन्स H इज इक्वल्स टू these all are the subgroups of Z7, and thus Z7 dash has subgroup H, which is equals to H2, and H1, which is equals to H3. Okay. These are all the subgroups of Z7. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7. Determine H1 which is equals to 0 bar, 5 bar, 10 bar, and H2 is equals to 0 bar, 4 bar, 8 bar, 12 bar are subgroup of finite group Z15. So first H1 के लिए टेबल करते हैं, प्रिपेयर टेबल फॉर H1. तो H1 के एलिमेंट्स क्या है? 0 बार, 5 बार, 10 बार, 0 बार, 5 बार और 10 बार है, प्लस 15। तो 0 प्लस 0, 0 बार आ जाएगा, 0 प्लस 5, 5, 0 प्लस 10, 10, 5 प्लस 0, 5, 5 प्लस 5, 10, देन 5 प्लस 10, 15, 15 का मॉड्यूलो 0 आता है, 10 प्लस 0, 10, 10 प्लस 5, 15, 15 का मॉड्यूलो 0, 10 प्लस 10, 20, 20 का मॉड्यूलो 15 है 5 बार। तो ये हुआ H1 के लिए। नेक्स्ट प्रिपेयर टेबल फॉर H2. सो H2 के लिए टेबल करते हैं, तो प्लस 15। तो H2 में एलिमेंट्स क्या है? यहाँ पे देखो क्वेश्चन में H2 के एलिमेंट्स है 0 बार, 4 बार, 8 बार एंड 12 बार। यहाँ पे देखो 0 बार, 4 बार, 8 बार एंड 12 बार। यहाँ पे भी 0 बार, 4 बार, 8 बार एंड 12 बार। सो 0 प्लस 0, 0, 0 प्लस 4, 4, 0 प्लस 8, 8 एंड 0 प्लस 12, 12, 4 प्लस 0, 4, 4 प्लस 4, 8, 8 प्लस 4, 0, 0, 15 मॉड्यूलो है, सॉरी 15 है ना, तो 8 प्लस 4, 12, देन 12 प्लस 4, 16, 16 का मॉड्यूलो है 4, सॉरी 15 से डिवाइड किया तो 16 का मॉड्यूलो आएगा 1, अगेन 8 प्लस 0, 8, 8 प्लस 4, 12, 8 प्लस 8, 16, 16 के लिए मॉड्यूलो 15 1 है, 8 प्लस 12, 20, 20 से 15 से डिवाइड किया तो ये 5 बार आ जाएगा। यहाँ पे 12 प्लस 4,
16 का मॉड्यूलो है 1, 12 प्लस 8 20, 12 प्लस 12 24, 24 के लिए मॉड्यूलो आ जाएगा उसका रिमाइंडर 9 बार। तो ये हुआ H2 के लिए टेबल। सो H1, यहाँ पे देखो H1 में, यहाँ पे देखो H1 में 0 बार, 5 बार और 10 बार है, तो ऑल एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट 0 बार, 5 बार और 10 बार। और यहाँ पे देखो H2 में 0 बार, 4 बार, 8 बार, 12 बार है, 0 बार, 4 बार, 8 बार और 12 बार है। इसके अलावा यहाँ पे 1 बार, 5 बार और 9 बार आए हैं एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, जो कि ये 0 बार, 4 बार, 8 बार, 12 बार के एलिमेंट्स में एग्जिस्ट नहीं होता है। देयरफॉर H1 इज द and therefore H1 is subgroup of Z15, but H2 is not, because there are extra elements are existed 1 bar, 5 bar, 9 bar, which are not existed in 0 bar, 4 bar, 8 bar, 12 bar elements. इसलिए H1 subgroup है, but H2 is not a subgroup. So आज इस वीडियो में हमने सब ग्रुप और उसके एग्जांपल्स देखे हैं। अभी इस वीडियो को मैं स्टॉप करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ये परम्यूटेशन ग्रुप्स। तो परम्यूटेशन ग्रुप्स के डेफिनेशंस, इवन परम्यूटेशन और परम्यूटेशंस क्या होते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अभी हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक यू।